Good evening, friends. Welcome to Paytm Money Talk. And today we are going to have a very interesting discussion. Discussion is going to be around investing in small cap and manufacturing sector. I'm Neeraj Gogoi, your host for the talk. And now, first session is going to be, of course, on manufacturing. And the second part, we are going to talk about small cap. Now, both are very exciting. Lots of discussions going around about manufacturing, key China plus one, then demographic, boon that India has got, and India is becoming. So how manufacturing as a team look like for investment from 3 to 5 years, or probably more than that, as India grows in GDP. India become bigger and bigger in terms of GDP. So to talk about that, I have got fund managers from Axis. I'll introduce him slightly later. And but before that, I would like to tell you that this talk is powered by Paytm Money. Okay, so the guest today to speak about manufacturing sector is Mr. Ashwin Patni. Mr. Ashwin is a head of products and alternative at Axis AMC. He joined Axis in the year 2010 as portfolio manager PMS, and later he was elevated to the post of head products. Prior to engagement with Axis AMC, Ashwin was associated with IDFC management, asset management. Now, I would like to welcome Ashwin. Ashwin, welcome to the stage. Hello, Neeraj. Yeah, hi, Ashwin. Great to see you. And we have been talking a lot about manufacturing. People are excited. Lots of discussions going around. Of course, I'm going to ask you. In fact, yeah, Axis AMC also going to launch a. It's already launched a NFO with a team of manufacturing. So we're going to talk about that. But before we start, everybody is excited to know about the market. How is it, too high? Because market is already at an all-time high kind of things. So people are scared of height. So something you are expecting any kind of corrections, consolidations, or the run to continue. What is your slight view on the market? So I think my basic view my basic view is that it's not very easy or useful to worry about the short term trajectory. Yes. मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं. टू बी वेरी फ्रैंक, अगले वीक में या 10 दिन में क्या होगा, ये आप में मुझे किसी को भी बहुत ज़्यादा ना तो हमें पता है या हमें पता होने का भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस इज द लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री, नोइंग दैट इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे. हैविंग सेड दैट, व्हाट इज द बेसिस फॉर जो करंट जो हम बुल मार्केट फेज देख रहे हैं, जो ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं, आई थिंक उसके बहुत स्ट्रक्चरल रीजंस हैं. इकोनॉमी इज Mm-hmm. डूइंग वेल, पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर कंफर्टेबल कि ये एक शॉर्ट टर्म बर्स्ट नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ है. प्रॉफिट्स आर इम्प्रूविंग, एनवायरनमेंट इज इम्प्रूविंग. जैसा आपने बताया, मैन्युफैक्चरिंग, सम ऑफ दीज थिंग्स वी विल टॉक अबाउट. बट देर आर सर्टन स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स जो हमारे इंडिया, स्पेशली इन इंडिया, दे आर हेल्पिंग अस इन टर्म्स ऑफ टुडेज सिचुएशन. तो Mm-hmm. आई थिंक चिंता की बात होती है अगर बुलिश मार्केट होता विदाउट द बेसिस, अंडरलाइंग बेसिस अगर नहीं होती तो, बिकॉज ऐसी सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं होती है. उसमें आप 1-2 महीना कोई न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे मार्केट चल भी गया, लेकिन उसको नॉर्मलाइज हो जाएगा. लेकिन जब सस्टेनेबल अंडरलाइंग ट्रेंड होता है, जो एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड दिख रहा है, तो मार्केट के पास ग्रोथ का देन अपॉर्चुनिटी रहता है. मार्केट का काम है न्यू हाई बनाना, बिकॉज इकोनॉमी अगर ग्रो करती रहेगी, प्रॉफिट्स अगर ग्रो करते रहेंगे, तो ये तो एक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है मार्केट. सो न्यू हाई से डरने की कोई बात नहीं है.
आई थिंक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स पे फोकस रखना चाहिए। और नियर टर्म अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहती है, हमेशा रहेगी, थोड़ा अप एंड डाउन होता रहेगा, उस पे ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स लुक रियली ब्राइट। सो बहुत या। बढ़िया, बहुत बढ़िया। So अगर somebody नया है investors, now this is not a bubble, right? As Ashwin said, it's a structural long term growth. So डरने का कोई बात नहीं है. That's quite reassuring. Ashwin, again, coming to manufacturing sectors, हम लोग काफी सालों से कह ही रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया इज गोइंग टू बी चाइना प्लस वन, one manufacturing hub. Is it really the time has come now that we are going to see a very good growth in that sector? अगर हम लोग को देखने वाला है बहुत जबरदस्त growth in manufacturing में, what are the factors, what are the reasons, what are the themes that's going to drive, do you think? आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सेक्टर है जो इकोसिस्टम के बेसिस पे ग्रो करता है। Mm-hmm. ऐसा हम इंडियन इकोनॉमी जैसे हम सब जानते हैं, लिबरलाइजेशन हुआ था 1990s में, उसके बाद से हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बढ़ी, ओवरऑल ग्रोथ इकोनॉमी में हुई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में पॉकेट्स में ही ग्रोथ हुई थी। चाहे हम Mm-hmm. अगर हिस्टोरिकली देखें पिछले 30 साल में, चाहे फार्मा Mm-hmm. था, ऑटो था, कुछ कुछ पॉकेट थे जहां हम ग्रो कर पा रहे थे, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप देखें, ब्रॉडर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम यहाँ पर नहीं था। Mm-hmm. बहुत सारे कारण थे। आई थिंक एज अ इकोनॉमी हम लोग बहुत छोटी थी, हमारी हमारी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी बहुत कम थी, हमारी सेविंग्स रेट वगैरह एट द साइज, उसकी बेसिस पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट का कैपेबिलिटी था वो कम था। Mm-hmm. हमारा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी पॉलिसीज गियर्ड अप नहीं थी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हुई है, Mm-hmm. बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी हमने लास्ट बहुत सालों में देखे हैं। तो अब धीरे धीरे अब वो स्टेज आया है कि एक इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री में हम उस सही जगह पर हैं जहाँ से हम एज ए इकोनॉमी सपोर्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग को। और साथ ही साथ एक अच्छा पॉलिसी एनवायरनमेंट हमको मिला है। पॉलिसी Mm-hmm. एनवायरनमेंट दोनों तरफ से, डोमेस्टिक पॉलिसी एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क, चाहे आप पीएलआई देखें, चाहे दूसरी स्कीम्स देखें, टैक्सेशन देखें वगैरह। एंड ग्लोबल पॉलिसी एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, जहाँ Mm-hmm. ग्लोबल कंपनीज जो कि बड़ी ड्राइवर होती हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कैपेक्स का, they are looking to diversify, they are looking to look for new ideas for their supply chain। तो एक बहुत अच्छा एक बैकड्रॉप हमें है, एक बहुत सही Mm-hmm. टाइम, राइट प्लेस राइट टाइम जिसे कहते हैं लोग। हमने ये पहले देखा है सर्विसेज सेक्टर में 25 साल पहले, जब इंडिया वाज राइट प्लेस राइट टाइम, कैसे हमने बूम Mm-hmm. देखा। आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रॉब्ली वो एक सिचुएशन आया है अभी, वेयर राइट प्लेस राइट टाइम, गवर्नमेंट इज अलाइंड, स्टेक होल्डर्स आर अलाइंड, और अब हम बहुत अच्छा एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं इस स्पेस में। करेक्ट। अगर आपका जो फंड है, व्हिच आर द सेक्टर्स, अगर हम सेक्टर्स का बात करें तो काफी सारा सेक्टर्स है। वी हैव गॉट डिफेंस, वी हैव गॉट केमिकल्स, वी हैव गॉट सो मेनी ऑटो। आपका जो फंड है, व्हिच आर द सेक्टर्स दे आर गोइंग टू फोकस, कौन कौन सा फंड सेक्टर्स में दे आर या प्राइमरीली गोइंग टू इन्वेस्ट? हाँ, तो आई थिंक सबसे पहले तो उसमें ये समझना चाहिए कि ये एक थीमेटिक फंड है जो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस्ड है। तो सबसे पहले हम्म। इसमें एक्सक्लूजन वाइज अगर हम देखें, तो हम्म। क्योंकि हमारे मार्केट का एक बहुत बड़ा पार्ट है वो सर्विसेज सेक्टर है, चाहे आप फाइनेंशियल सर्विसेज देखें, आईटी सर्विसेज देखें, हम्म। historically they have been a big part and driver of the market and a big part of the market। तो हम्म। एक मतलब मैं अगर ये ये भी कहूँ कि लोग पूछते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग थीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग थीम पे प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों है? तो हम्म। उसका जवाब हम ये देते हैं कि अगर आप नॉर्मल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखें, तो सर्विसेज उसको डोमिनेट करता है बिकॉज़ ऑफ द बिल्कुल। नेचर ऑफ आवर मार्केट। हम्म। 50% ऑलमोस्ट आपका जो है, अगर आप बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सर्विसेज वगैरह को कंबाइन करें, तो 50% ऑलमोस्ट मार्केट सर्विसेज में हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का करने का हमारा इंटरेस्ट यही था कि आप एक स्पेसिफिक फोकस तरीके से जो रेलेवेंट थीम्स हैं, रेलेवेंट सेक्टर्स, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बचे हुए सेक्टर्स हैं। टू आंसर योर क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग में
ऑलमोस्ट 11 अलग-अलग सेक्टर्स आते हैं, 66 हम्म अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ आती हैं। अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊँ तो केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रियल्स, डिफेंस, कैपिटल हम्म गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, तो बहुत सारी अलग-अलग आप देख रहे हैं कि एक बहुत डाइवर्सिफाइड अलग-अलग मिक्स है इंडस्ट्रीज़ का जो कि अवेलेबल है। और एक कॉमन हम्म पॉइंट यही है कि ये सारे सेक्टर्स और ऐसे हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग हम्म साइकिल में बेनिफिट अलग-अलग तरह से इनको मिलता है। हम्म Okay. Now, a important question is fund stock selection process. What is the process that you are going to adapt? There are hundred thousands of companies are there. So, आप किस तरीके से select करोगे companies को from those sectors? आई थिंक जब जब हमारा जो बेसिक एक थीसिस है और वो हम्म थीसिस ये है कि ये स्पेस में एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हमको मिलने वाला है एज़ अ हम्म मैन्युफैक्चरिंग एज़ अ थीम और इसी वजह से हम इतने कन्विक्शन के साथ ये प्रोडक्ट लेके आए हैं। तो नेचुरली जब हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे जो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया है या सबसे ज़रूरी क्राइटेरिया है, ऐसी कंपनीज़ हों जो एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ जिनका पोटेंशियल अच्छा है आज की तारीख में, जिसको हमको लगता है कि जो अगले कुछ साल में बहुत अच्छा ग्रो कर पाएँगी। मैन्युफैक्चरिंग में कैपिटल एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी होती है, हम्म गवर्नेंस बहुत ज़रूरी होती है। सो वो सारे इनेबलिंग पैरामीटर्स आपकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी हम्म होती है, आपका प्रमोटर बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है। तो देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ हाइजीन रिक्वायरमेंट्स जो आपको चाहिए होती हैं, ताकि हम्म आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले वो होनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली जो ये स्टाइल है या जो ढूँढ रहे हैं वो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ढूँढ रहे हैं क्योंकि जैसा मैं आपसे कह रहा था कि एक इकोसिस्टम और एक राइट प्लेस राइट टाइम वाला सिचुएशन है मैन्युफैक्चरिंग में। बहुत बड़ा हम्म एक ग्रोथ स्पर्ट हमको एक्सपेक्टेशन है आ सकता है इस स्पेस में। हम्म तो जो कंपनीज़ उस तरह की ग्रोथ स्पर्ट को पार्टिसिपेट कर सकती हैं, डिलीवर कर सकती हैं, उस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। हम्म, ठीक है। अ, अभी रिसेंटली हम लोग ने क्वाइट रन अप देखे हैं स्मॉल कैप मिड कैप्स में, इनफैक्ट स्टिल कंटिन्यूइंग इनफैक्ट, एंड डिस्कशंस आर दैट द स्मॉल कैप्स वैल्यूएशंस आर स्ट्रेच्ड and people are betting more on the large cap probably, so आप लोग का जो फंड होगा यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का रहेगा? कितना आप लार्ज कैप में ज्यादा फोकस करोगे, स्मॉल कैप कैप में ज्यादा फोकस करोगे? किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आप करने वाले हो? आई थिंक बिफोर फंड की बात करने से पहले एक ओवरऑल जो आपने पॉइंट बोला, हाँ। तो हमें भी ऐसा लगता है कि अगर आप ब्रॉडली देखें, तो आज वैल्यूएशन वाइज़ लार्ज कैप की वैल्यूएशन स्मॉल कैप, मिड कैप से ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये बात तो है। लेकिन हम्म साथ ही साथ उसमें एक और बात हम ये भी कहेंगे कि इस चीज़ को आप एक इकट्ठे नहीं देख सकते। हम्म लार्ज कैप में 100 कंपनियाँ हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप में 300-400 से भी ज़्यादा कंपनियाँ हैं। हमें आज भी लगता है कि आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी सेगमेंट हो। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि अंडरलाइंग ग्रोथ मोमेंटम, अर्निंग्स मोमेंटम अच्छा है। तो कंपनियाँ हम्म जो अच्छा अर्निंग्स डिलीवर कर पाती हैं, ऑटोमैटिकली आपका वो अर्निंग्स बेस बढ़ता जाता है, तो आपके पास कुशन आता जाता है फ्यूचर शेयर शेयर हम्म प्राइस के लिए भी। तो अ अ, ओवरऑल डेफ़िनेटली आज की सिचुएशन के हिसाब से कुशन लार्ज कैप स्पेस में ज़्यादा है। लेकिन जब इस थीम की बात आती है, जिस फंड की बात आती है, तो हम कहेंगे कि ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है इन द सेंस कि आप डाइवर्सिफाइड हैं, मिड्स, लार्ज हम्म दोनों। सो हमको 40 से 60% जो है मिड स्मॉल में रहेगा, बैलेंस लार्ज में रहेगा। तो कोई भी एक साइड में हम बहुत ज़्यादा एलोकेट नहीं करना चाहते। अल्टीमेटली मल्टी कैप की जैसे अप्रोच है ये कि आपके हम्म सारे कैप चाहे लार्ज, मिड, स्मॉल आपको पार्टिसिपेट करने मिले। और एक और जो पिक्यूलियर सिचुएशन है इंडियन मार्केट का कि कुछ थीम्स आपको लार्ज कैप में ज़्यादा मिलती हैं, कुछ सेक्टर्स आपको लार्ज कैप में ज़्यादा मिलते हैं, कुछ सेक्टर्स आपको हम्म मिड स्मॉल में ज़्यादा मिलते हैं। तो जैसे अगर हम हम्म इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो अ, कुछ सेक्टर्स जो कंजम्पशन ओरिएंटेड है उसमें ज़्यादा लार्ज कैप है, लेकिन कुछ जो इंफ्रा या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वो मिड स्मॉल में ज़्यादा है। तो थोड़ा-सा एक डाइवर्सिफिकेशन का कारण एक वो भी है कि आप सेक्टरली जब डाइवर्सिफाइड करते हैं तो आपको कैपिटल मार्केट कैप वाइज़ भी डाइवर्सिफाइड एक करने का चांस मिल जाता है।
ओके। नाउ काफ़ी सारे लोगों ने नंद मिश्र इनफैक्ट मैं पार्टिसिप जो व्यूअर्स है रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज फील फ्री गो अहेड टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। नंद मिश्र ने कहा है आई एम न्यू टू द मार्केट एंड किसी ने और चंद्रशेखर मौर्य ये टाइम सही है क्या इन्वेस्टमेंट के लिए। नाउ इनको दोनों को कंबाइन करके नाउ ये जो थीमेटिक फंड है और फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ ए थीमेटिक फंड इज इट सुटेबल फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। एक न्यू इन्वेस्टर्स को क्या अप्रोच लेना चाहिए एंड एट द सेम टाइम चंद्र प्रकाश मौर्य का जो क्वेश्चन है इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट ऑल्सो। तो पहले तो मैं ओवरऑल एक जो आपका सवाल है, जो सेकंड सवाल है कि ये राइट टाइम है हाँ। इन्वेस्ट करने के लिए ओवरऑल, तो इक्विटी मार्केट में आई थिंक अल्टीमेटली मार्केट रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी जो है। जब सिचुएशन अच्छी होती है, इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है, कंपनियां अच्छा कर रही होती है, ग्रोथ हम्म। अर्निंग्स में हो रही होती हैं, वही चीज़ मार्केट में रिफ्लेक्ट करती है। मार्केट में छोटा हम्म। मोटा वॉलेटिलिटी होता रहता है, लेकिन लॉन्गर टर्म ट्रेंड इसी चीज़ पे रिलाय करता है कि इकोनॉमी ग्रो करती रहे, अर्निंग्स ग्रो करती रहे। तो अगर हमारे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स देखें तो बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी मेंटेन्ड है। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो क्वार्टरली जीडीपी नंबर आए तो ग्रोथ सबकी एक्सपेक्टेशन से एक्चुअली ज़्यादा थी, और हम्म। इसकी वजह से लोगों ने इस साल की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, इवन आरबीआई ने भी अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं, और अब ये एक्सपेक्टेशन है कि इवन अगले साल हमारी ग्रोथ अच्छी मेंटेन रहेगी और अगले कुछ साल तक हमारी ग्रोथ सस्टेन कर सकती है, जो हमारा आज का फाउंडेशन बना हुआ है उसको देख करके। तो हम्म। ओवरऑल बैकड्रॉप बहुत ही अच्छा है। कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं, जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, या कमोडिटी प्राइस हैं, या कुछ वॉलेटिलिटी की रिस्क आ जाती है जो शॉक्स की वजह से। ये चीज़ें हमेशा रहेंगी, ये कभी भी पूरी तरह से आपको कंप्लीटली एक रिस्क फ्री मार्केट जो कहते हैं वैसा कुछ होता नहीं है, हम्म। कभी मिलेगा भी नहीं। लेकिन जितना एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सिचुएशन हो सकता है उसके हिसाब से अभी की सिचुएशन देखी जाए तो काफ़ी रीजनेबल है। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं लेकिन आपके पास हम्म। होराइजन है 3-5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, तो इक्विटी मार्केट्स डेफिनेटली आपको कंसिडर करने चाहिए। वेट मत कीजिए, वेट करने का कोई हमने लॉन्ग टर्म में देखा इक्विटी में वेट करने का बेनिफिट नहीं होता है, नुकसान होता है। मार्केट को टाइम कर पाना बहुत मुश्किल है, और सबसे आसान और सबसे ईज़ी तरीका है आप रेगुलर इन्वेस्ट कर लीजिए। अगर आप हम्म। मंथली बेसिस पे कर दीजिए, आपके पास टाइमिंग रिस्क भी कम हो जाती है, आप रेगुलरली एलोकेट भी कर सकते हैं। तो ये तो सवाल है कि जो ओवरऑल इक्विटी में एलोकेट करने की बात आती है। अब उसमें अगर सेकंड हम पार्ट देखें कि ये जो थीमेटिक इन्वेस्टिंग है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, हम्म। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करें, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि ये नॉर्मली थीम्स जो होती हैं, ये थोड़े से एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए होती है, थोड़ी सी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के लिए होती है। तो जो इन्वेस्टर्स नए हैं मार्केट में, पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स बेहतर हैं। चाहे वो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप टाइप के फंड्स हों, जो भी एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी हो, आई थिंक हम्म। वो एक बेहतर फंड्स हैं उनकी शुरुआत के लिए। जैसे इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म हो गए, ओवर टाइम उनको एक स्पेसिफिक थीम में एलोकेट करना है जिसकी उनको समझ है, जिनकी वो रिस्क वगैरह को वो समझ सकते हैं, इम्पैक्ट समझ सकते हैं, तो फिर आप स्पेसिफिक थीम्स के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते हम्म। आपको ये थीम की अंडरस्टैंडिंग है, बशर्ते आप इस थीम को जो एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप उसके होराइजन में आप एलोकेट कर सकते हो। तो हम्म। आई वुड से इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से डाइवर्सिफाइड फंड्स में। अगर आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, अगर आप ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टर हैं और आपको एक एक्टिव थीम चाहिए जो अच्छा करने के पोटेंशियल रखती है, तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है। अच्छा। नाउ अगेन देखिए और एक क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक साइकिल अभी हम लोग देखे हैं कि यूरोप अमेरिका ऑलमोस्ट मे बी इन द रिसेशनरी काइंड ऑफ ए प्रेशर। इंडिया ऑफ कोर्स इज नॉट। नाउ आगे जाके भी हो सकता है मे बी 3-4 years डाउन द लाइन सम काइंड ऑफ प्रेशर माइट कम। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हाउ इज इट रिलेटेड टू इकोनॉमिक साइकिल्स अप एंड डाउन। मतलब कितना सेंसिटिविटी कैसे है इसका मैन्युफैक्चरिंग आई सेक्टर थिंक, का। हाँ जी, तो ये एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हम्म।
जब हम कहते हैं कि थीमेटिक फंड हैं और वर्सेस डाइवर्सिफाइड हैं, तो एक कारण मैंने क्यों ऐसा कहा कि ये इन्फॉर्म्ड और एक्टिव इन्वेस्टर्स होना चाहिए, क्योंकि ये बिकॉज़ हम कुछ ही सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, तो साइकिल का इम्पैक्ट इनमें ज़्यादा होता है। हम्म, और वॉलेटिलिटी का रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। कारण कि आप कैपिटल साइकिल जो होती है वो इकोनॉमिक साइकिल से जुड़ी हुई होती है। कंपनियाँ इन्वेस्ट करती हैं जब कैपिटल साइकिल फ़ेवरेबल है, जैसे आज की सिचुएशन है जहाँ ओवरऑल डेट कम हो गया है, कंपनीज़ का बैंक्स का कैपिटल सिचुएशन बहुत अच्छा है। हम्म, ओवरऑल कैपिटल सिचुएशन इकोनॉमी में फेवरेबल है, हमारी हम्म, एबिलिटी है इन्वेस्ट करने की इस तरह की थीम्स में, और ग्रोथ सिचुएशन अच्छा है। तो ये सब बैकड्रॉप जब अच्छा होता है तब आप मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में उसका बेनिफिट देखते हैं। लेकिन यही हम्म, साइकिल जब उल्टा होती है, जैसे हमने देखा था 2010 से 2015 के फेज़ में, कि जब इकोनॉमी में डेट बढ़ जाता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, ग्रोथ में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, तब इस तरह की थीम्स को वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा देखने हम्म, मिलती है या नुकसान देखने भी मिलता है। अ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि स्ट्रक्चरली आज की तारीख में ये थीम जो पुरानी साइकिल है उसको तोड़ के बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, ये हमारा कन्विक्शन है। लेकिन ये बात भी रहेगी कि ये एक सिक्लिकल थीम है और साइकिल के हिसाब से इसमें वॉलेटिलिटी भी लोगों को देखने को मिलेगी। मिल सकता है। quite a few quite a number of questions have come. Tapas Tirupur Shankar. Now I'll take Tirupur Shankar ka question first. What will be the opening price of the new Axis India Manufacturing NFO mutual fund, and when will the price increase approximately? Approximately here, of Brahma. तो देखिए एक बात है जो हम बहुत बार क्लैरिफाई नहीं करते हैं और नए इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने पूछी है कि लेट मी Mhm, क्लैरिफाई। कोई भी नया फंड होता है वो अपने बेस एनएवी से लाइफ स्टार्ट करता है। बेस एनएवी काफ़ी केसेस में 10 रुपये होती है, हमारी भी 10 रुपये है, बट कुछ और भी हो सकती है, लेकिन एक बेस एनएवी से कोई भी नया फंड अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। mhm, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर एनएवी 10 है या एनएवी 100 है तो आपको कुछ सस्ता या महंगा मिला है, क्योंकि चाहे वो आज जो भी फंड आज इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, आज मेरा फंड 10 रुपए में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी दूसरे का फंड 25 रुपए के एनएवी पे है, लेकिन जो mhm, स्टॉक्स वो खरीद रहे हैं मार्केट में उसकी प्राइस वही है। तो अगर हम वही mhm, स्टॉक्स खरीदेंगे तो हमको उसी प्राइस पे मिलेगा। नैव सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है कि आपका अलॉटमेंट प्राइस क्या है, जिधर से आपको आपकी जर्नी की ग्रोथ मिलेगी। तो नए mhm, इन्वेस्टर्स जो इस फंड में आएँगे, आप 10 रुपए में आएँगे। अगर आप मान लीजिए अगले 3 साल, 5 साल तक रहे, तो जो इस फंड की जर्नी होगी, जो भी रिटर्न ये फंड जनरेट करेगा, वो आपका प्राइस उतना आपसे चेंज हो जाएगा। 10 रुपए से बजाय mhm, अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करता है, तो ये बढ़ के कुछ हायर नैव पे चला जाएगा। तो mhm, ये एक मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट अकाउंटिंग नंबर है, आपको आपकी पोर्टफोलियो को ट्रैक रखने के लिए। इस नंबर mhm, का और ज़्यादा कोई पर्पस नहीं होता है और इससे पीपल शुड नीड टू बी केयरफुल। हैविंग सेड दैट व्हाट विल द प्राइस डू, ये तो खैर मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो प्रिडिक्ट कर पाना तो हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन जैसे मैं आपको पहले भी शुरुआत में भी बोला कि अगले 3-5 साल और उसके बियॉन्ड इक्विटी मार्केट प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है। ये एक्सपेक्टेशन हमारी क्यों है? क्योंकि एक ओवरऑल अंडरलाइंग ग्रोथ मोमेंटम इकोनॉमी में बहुत अच्छा है। एक फेवरेबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत अच्छा फेवरेबल सिचुएशन बन गया है, बिकॉज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड ग्लोबल बैकड्रॉप जो है। तो ऐसे काफ़ी कारण हैं जिसकी वजह से अगले कुछ सालों में हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। वही ग्रोथ हमें इस सेक्टर में और इस स्पेस में दिखाई देती है जो हम हमारे इस फंड के थ्रू कैप्चर करना चाहते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो फंड्स इस फंड में इन्वेस्टर आएँगे और अगले 3-5 साल और लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, mhm. उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। Yes.
काफी सारे लोग तिरुपुर शंकर, चंद्र प्रकाश मौर्य, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ऑलरेडी स्टार्टेड, दे हैव अप्लाइड. सो एक्चुअली रियली अप्रिशिएट, बिकॉज इफ वी कैन रियली गेट सम क्लियरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग आपको दे सका थ्रू आवर डिस्कशंस, एक कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है, वो क्लियरिटी हम लोग दे पाया आपको थ्रू आवर डिस्कशंस, एंड यू हैव टेकन डिसीजन ऑन दैट. So thank you so much. Uh, and again, the question है goal based investing. How can one align the funds objective with our investment goal? क्योंकि हम लोग जब गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, तो किस तरीके का गोल्स के लिए इस फंड इज मोर शॉर्ट टर्म लॉन्ग. सो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि कोई भी फंड अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है। फंड अच्छा या हम्म. बुरा अ, अच्छा फंड तब बनता है जब वो फंड अपने एक सही गोल के साथ अलाइन्ड है, आप उसको सही तरह से यूज़ करें। और उसी हम्म. फंड को अच्छे फंड को अगर आप गलत तरह से यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए हम्म. खराब भी हो सकता है। अ, हम्म. जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा कि ये फंड जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये जो आपके हम्म. लंबे ग्रोथ ओरिएंटेड गोल्स हैं, चाहे 5-7 साल हम्म. और उसके बियॉन्ड, उसके लिए ये फंड सही है। लेकिन अगर आप उस इस फंड को शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करेंगे, 1 महीना, 2 महीना जो शॉर्ट टर्म है, तो उसके लिए ये फंड सही नहीं है। तो हम्म. जो आपके ग्रोथ ओरिएंटेड गोल्स हैं या लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन ओरिएंटेड गोल्स हैं, वैसे गोल्स के लिए ये फंड सही है। Very good. एक क्वेश्चन है, of course this is not exactly with respect to manufacturing fund, but again, because since I think it's Tapas Travels, okay, sir, can I invest in Nifty IT index or Nifty 50 index at present moment of the market, which is the best? uh, देखिए आई फ़ील मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ मार्केट टाइमिंग को लेकर के मेरा व्यू। स्पेशली अगर आप सेक्टर्स में देखें तो टाइम कर पाना आसान नहीं होता है। हम्म. अ, अ, थीम की जैसे अगर कोई थीम है जैसे मैन्युफैक्चरिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसी थीम हम्म. में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, ताकि आप लॉन्गर हम्म. टर्म में इन्वेस्ट करके उसका बेनिफिट लें। शॉर्ट टर्म हम्म. में इन चीज़ों को टाइम कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता और शायद उसका कोई बहुत फ़ायदा भी नहीं होता। तो हम्म. आपका जो सवाल है, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा हमेशा कि डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। सो निफ्टी हम्म. 50 में इन्वेस्ट कीजिए या निफ्टी अगर आपको ब्रॉडर करना है तो निफ्टी 100 भी हम्म. होता है, मिड कैप भी होता हम्म. है। आपकी एलोकेशन के हिसाब से आप उसमें कैप्चर कर सकते हैं। हम्म. अ, रहा सवाल आईटी या किसी भी सेक्टर वाले इंडेक्स का, वो आई फ़ील कि अ इट्स नॉट अबाउट कि उनके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं या खराब हैं, बट शॉर्टर हम्म. टर्म टाइमिंग के पर्सपेक्टिव से हम लोग नॉर्मली मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं डाइवर्सिफाइड में ही रहने का रिकमेंड करूँगा हम्म. फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। Mm. Again, two questions. How many stocks you are going to likely to have in your fund? Number one, and हुँ। expense ratios, वगैरह, what should would be the number? सो एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। Mm-hmm. हम लोग का क्लियर टारगेट नहीं है स्टॉक्स का, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसमें हमको एक अच्छा बैलेंस जैसे मैं बताया आपको मेंटेन करना है बिटवीन मिड स्मॉल एंड लार्ज, तो Mm-hmm. उसको रिफ्लेक्ट करेंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स। Mm-hmm. एक नॉर्मल टिपिकल फंड की तरह होगा, बहुत ज़्यादा Mm-hmm. डाइवर्सिफाइड नहीं होगा। अ, उसी तरह से एक्सपेंस रेशियो भी जो स्लैब रेट होते हैं नॉर्मल इक्विटी फंड के, उसी के बराबर होगा। सो ये एक रेगुलर फंड है एज़ फार एज़ इस तरह के पैरामीटर्स आर कंसर्न्ड, एक नॉर्मल एक्सपेंस रेशियो ही मिलेगा। Okay. And Ashwin, I think that's a lots of informations that we have discussed. We discussed lot many points, and people are appreciating the way we have covered the entire theme, in last few days. So any closing statement that you have, you'd like to give? No, thanks for first of all, thanks a lot, Neeraj. Very happy to come and participate in this interaction, and I feel that it is always people spend too much time thinking about market, is this the right time or not, and Mm-hmm. worrying about market rise or fall. I think the biggest thing and best thing we can do is to start investing quickly and regularly.
ताकि हम हमारा पैसा आइडल ना रहे और हमारा पैसा एक ग्रोथ में काम कर पाए. सो दैट इज पॉइंट नंबर वन. एंड पॉइंट नंबर टू, एज अ थीम मैन्युफैक्चरिंग हैज़ कम ऑफ एज, राइट प्लेस राइट टाइम, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ. And I think it is got a prospect which it can be a multi-year, if not multi-decade growth story. आपने examples globally देखा होगा, चाइना, जापान, Mm-hmm. कोरिया, इन सब देशों में एक बार जब मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनना चालू हुआ, ग्रोथ चालू हुआ, तो मल्टी डेकेड Mm-hmm. वो चीज़, वो थीम प्ले आउट की. हमें लगता है कि इंडिया में ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स अब पैदा हुए हैं और इसका बेनिफिट बहुत साल तक मिलेगा. सो इट्स अ थीम जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए इट कैन बी अ ह्यूज वैल्यू क्रिएशन अपॉर्चुनिटी. सो दैट विल बी माय सेकंड. Thank you so much, Ashwin, for being a part of this program. I'm sure people are benefited. They got lots of questions answered. Thank you so much, Ashwin. थैंक यू नीरज, बाय. Thank you. Bye. So, guys, that was Mr. Ashwin Patni. We are talking about manufacturing sectors, and now all that you have been waiting for to discuss about small cap investing, because that is an exciting space, right? Mid cap, small cap, micro cap, they have been moving quite fast. They have given good growth, and as you said, many questions are there in the mind. To answer those questions, I have got Mr. Ajay Khandelwal, fund manager, Motilal Oswal Mutual Fund. Now, let me introduce Ajay. Ajay is an MBA Bachelor of Engineering. Prior to joining Motilal, he worked with Canara Robeco Mutual Fund. He was with BOI, AXA Mutual Fund, BNK Securities, and Infosys. So it's a great pleasure to have Ajay. Ajay, welcome to the show. Thanks a lot, sir, for giving us the opportunity. Yeah, great to see you, Ajay. So, Ajay, we have been talking about manufacturing, right? A few minutes back, and we are talking about different sectors, and quite a few questions were coming about small cap, mid cap, large cap. People have invested. We have been doing many programs before, 3 4 months, and we have been doing, in fact. And so today we're going to talk about this sector, this particular mutual fund. So, what do you think? People are saying that valuation is a little bit stressed, or do you think it's really stressed? Do you think, how do you see it from 5 6 years kind of a perspective, investing in small or even, yeah, small cap sector? So, sir, we are getting this question from even advisors and investors. Mm-hmm. I think our approach is very simple here, that we have to focus on fundamentals, and Mm. this small cap journey, if we have to give some perspective, the earning from FY06 to FY20 for small cap index was around 150 rupees. So Okay. almost after 13, 14 years of stagnant earnings, and the kind of challenges that small caps have gone through during all this time, so I think that inflection point came somewhere around that 16, 17 when the GST implementation happened. The Mm-hmm. shift towards more organized part of business started happening. Mm. It took a couple of years for them to actually show that in their performance, but I Mm. think COVID really pushed them to get their act right, cut their cost. How it happened with all of us, see, even post COVID we realized we need to cut down on unnecessary expenditure, we need to focus our energies on more productive things. So these small cap businesses, after FY06 to 2020 of flat earnings. FY21 there's a EPS of 231 rupees, and in 2 years that moved to 500 plus. Mm. So this growth of earnings is what is reflected in stock price performance for small caps. Mm. And given the kind of order visibility, the kind of business momentum that we can see in small cap sector, I think we are on our way next 2 3 years to reach a earning of 8 900 rupees. So from a journey of 2,200 rupees to 900, we are somewhere in between that. And see, this is again the kind of visibility that we have in next 2 3 years. If that Mm. is attained, I'm sure there will be again some kind of ups and downs in between. But if these small cap businesses are able to deliver that kind of earnings, they will have a lot more resources. Then again, we have to reevaluate.
So Hmm. investors need to understand we are in between that journey at 500. But if we stop here, then the next leg of value creation, wealth creation again will be missed. That Hmm. will give you some kind of objectivity, sir. Okay. So is it a buy and hold kind of investment, long term buy and hold, or it needs a little bit of active investing? So, sir, in small caps, especially if last 2 3 years, you will see there have been sector rotation. When Mm-hmm. COVID happened, the platform businesses, some of the service businesses, the essential kind of businesses, they did well. Mm-hmm. After that, when open up happened, then certain businesses, industries which actually participated in opening trade, so a lot of services, home improvement, that work. After that, when COVID impact wore down, but the suddenly war broke out, so the power Hmm. cost, raw material, logistic costs went through the roof. So Hmm. there is sector rotation that has happened. There Hmm. have been margin expansion, as well as some sectors and business have seen a lot of margin compression. So it's small Hmm. cap investing, I think, requires active management. We always need to be on the right side of earning cycle. That is why I Hmm. think small cap schemes have most of the time delivered better returns compared to even indices. For a brief period of time, they may not have. But I think by and large, if you see, I think active management also helps in containing your drawdowns. Because see, Hmm. if there are risks, you need to take corrective measures. So Hmm. there also, I think the small cap investing requires active management. Active, correct. There's a question actually, Mohit Yadav, उन्होंने पूछा था just in the previous session. So I kept the question for you, uh, and it's a very important question. Active small cap fund में कितने time तक invest रहना चाहिए ताकि अच्छे return मिले? So मोहित जी, when I said कि जब अर्निंग्स कम आए थे स्मॉल कैप के, बट Hmm. इफ अगर आप फिर भी रिटर्न्स देखेंगे, if somebody had invested 100 rupees in 2004, well, that 100 rupees has become 1700 rupees in 20 years. सो आप ये देखिए कि वो 17 टाइम रिटर्न्स तो फिर भी बना है, एवरेज रिटर्न हैज बीन 16-17%. एंड इसके बीच में यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग विच इज गॉन रॉन्ग, सब कुछ हुआ है. Hmm. And now, finally, when we are saying that small cap, the size of businesses in small cap, their health has changed so much. I think the good part of small cap return is yet to come. So, आपको more than time, I think आपको one is you have to stay invested. Second, आपका allocation कितना है मोहित जी, वो और important है. आज अगर if you have 100 rupees of portfolio, you are only 10 rupees in small cap. तो फिर मोहित जी अगर वो डबल भी हो गया, यू विल नॉट सी द इम्पैक्ट कमिंग देयर इन योर पोर्टफोलियो रिटर्न. सो टाइम Right. plus sir, right allocation. Even for us, in my portfolio, if I like some stock and stock has given say 200% return, but if it is not a right allocation in my portfolio, it will not reflect in my overall returns. So I think these two things, one is time plus allocation, equally important. अपने एलोकेशन का बात कहे हैं एंड देखिए आइडियली वी से दैट स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग इज थोड़ा रिस्की है एंड एक कोर पोर्टफोलियो में हमेशा हम लोग को लार्ज कैप निफ्टी 50 होना चाहिए. नाउ आइडियली हाउ मच एलोकेशन इन अ स्मॉल कैप फॉर अ इन्वेस्टर हु वांट टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म इज एन आइडियल नंबर? So, Neeraj, again, see, no one thumb rule which can fit for everyone. But if an investor doesn't require money for next 3 years, say, हम्म. then I think they have a decent investment horizon. And if they have regular income coming, which they still have to deploy, then I think at least a 40% kind of small cap exposure is good. Because see, what we are saying is we have to keep reevaluating our portfolio at all interval of time. एग्जैक्टली. एंड गिवन द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, आज अगर आप मैक्रो लेवल माइक्रो लेवल कहीं भी देखेंगे, जहां पे सी लार्ज कैप को हम क्यों बोलते हैं लार्ज कैप इन्वेस्टिंग इज बेटर, बिकॉज वहां पे क्या है, चैलेंजेस एक तो पता होते हैं, रिस्क पता होती हैं, प्लस आपको पता है हु आर द प्लेयर्स. इट्स नॉट दैट टुमारो द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर विल चेंज इन नो टाइम. So the risks are well articulated in large cap. In small cap, sometimes we still have to figure out what are those pertinent risks. That is why people say it is risky. But again, as I have to give you an example,
The largest small cap company in 2013 was 2,500 crore. Now Hmm. we have 535 companies which are more than 2,000 crore. Hmm. So you compare these, the size and scale of small cap is changed, but because the market cap categorization is like that, top 100 is large, then next 150 is mid cap, and rest is small cap. But the size and shape has changed completely. These small cap businesses, in terms of their sales, profit, cash flow, management bandwidth, skill set, it's completely different. Their Hmm. balance sheets are much more now healthy. See, Neeraj ji, one last point I want to make here is रिस्क कहाँ होता है स्मॉल कैप में, जबकि आपने पैसा लिया है बाहर से, उधारी का पैसा है बैंक का, और फिर मैंने उसके बाद प्लांट या मशीनरी डाला है. कल Hmm. अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, डिमांड कम हुआ, किसी प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो बैंक का पैसा कैसे वापस करूंगा? वो मेरा Hmm. फैसिलिटी पे ही रिस्क आ जाता है, बिजनेस पे रिस्क आ जाता है. आज ये स्मॉल कैप बिजनेसेस अगर पहले 10 साल 2014 से 21 तक, आज अगर वो 70% बैंक का पैसा लेते थे, आज वो 30% बैंक का पैसा लेते हैं. सो आपको Hmm. ये समझना पड़ेगा कि जब मेरा बैंक का पैसा कम है, माय रिस्क इज एनीवेज लो नाउ. सो इफ टुमारो Hmm. समथिंग गोज रॉन्ग, आई एम मच बेटर प्रिपेयर्ड टू हैंडल दैट रिस्क. इसीलिए आई एम सेइंग कि comparing with the past, we have to see that small cap business have changed completely, and Very good. in terms of balance sheet and P&L risk have reduced. So I think इसीलिए we have much more confidence that investors can have higher allocation. Absolutely. I think this point has clarified many of the doubts in the mind of the viewers and investors with respect to is it a good time. I think again we have got another viewer, Mr. Vikram Prabhuji. So he has got two questions. I will club both of the questions. He said, how do rising interest rate affect stock market? Of course, this is a general question. Now, if you see the interest rates are almost constant for May and may reduce, which type of investment philosophy works from here onwards? That's a very interesting question, important. And second, okay, I think we'll go ahead with this and then we'll go for the second one. So Vikramji, see, when interest rate increase, investors' expectation from all the asset classes increase. Mhm. So this is simple. Then stock market returns have to be in comparison with increase in interest rate. So then how it can happen is, if your earning is not changing, your prices have to come down. That is why when interest rate increase, you will see all all market caps, they come down. The Hmm. correction is normally when interest rate increase, it is across market, not related to one or two market caps. So generally that happens. Now when in last 1.5 year we have seen increase in interest rate, and in 6 months I think we will see now interest rate coming down also. Hmm. So normally when we have gone through the history, uh, interest rate coming down is good for small caps. But as I said, their balance sheet anyways are good right now. But in as investment, if we have to look at the investment universe, I think small caps benefit by uh, reduction in interest rates clearly. Great. Another question from him. What are the factors that need to be considered while investing in any uh, small cap fund? Any fund. The fund manager's credibility, fund house track record, or investment philosophy. So, see, you're asking a fund manager this question. So, I'll tell you how I look at small cap Mhm. companies. You should look at the small cap funds. One is, in small cap, what happens is, if your size is too big, then to Hmm. buy and sell, you will have some kind of challenges. Second, to Hmm. make a right allocation, if it is a say 4-5 thousand crore market cap company, and if the fund size is very large, then to build even say 1.5-2% allocation, it will be difficult. These are normal things. So that is one thing. Second is, see, Hmm. the kind of risk practices a fund house has, the kind of Hmm. style that they have. So for example, we believe in growth, and according to us, India is a growth story. Small cap clearly captures that growth. So for us, finding right good businesses at reasonable valuation which can deliver that growth is an easy way to give decent returns. So you have Hmm. to see that AMC is, whether what is the investment style,
One. Second, what kind of stocks and concentration they run. What is their overall philosophy? Third is how frequently they change their portfolio, or they don't at all, or they manage their risk through change in portfolio. So these are few things that you need to consider. Okay, great. Now, Ajay, we have seen quite a few, small cap funds have launched in last few months. Now, coming to your Motilal Oswal's small cap fund, how it is going to be different than the other funds? Is going to be different or in the same track? So, Neeraj, first thing, if you look at the overall small cap scheme space, most of the funds Mm-hmm. have between 50 to 200 stocks now. I Mm-hmm. think we don't want to have that kind of number of stocks in our portfolio. We don't want that point 2, point 3, point 4 kind of allocation. So you Mm-hmm. will see we will have stocks between 1.5% to 4.5%. So no stock below 1.5, no stock above 4.5%. One is that. Second, we will have good 30, 35 stock portfolio, unlike 50, 70, 80 stock portfolio. Mm-hmm. But there'll be no concentration risk. It's not Mm-hmm. that I will have five stocks, which is like 40% of the portfolio. No, Mm-hmm. only 4.5 maximum. Second is, see, because we are starting now, I think we will not like to buy stocks which are already at 40, 50 times. We want to Correct. buy stocks which are reasonably priced. We have to scan and see that which are those part of market where we find decent growth, visibility, upside without paying at for such hefty multiples. Mm. So again, based on case to case, we have to make sure that our portfolio is reasonably priced. Mm. Second, third is see, our line of difference is always quality, because in small cap, if I can contain the drawdowns, half of the job is done. So we need to make sure that we do not compromise on quality of portfolio. There are no skewness in terms of sectoral weights or stocks. Mm. So run a good balanced portfolio which is reasonably priced in this environment, and which clearly identifies with our philosophy of QGLP, where we talk about quality, growth, longevity, enterprise. So these some of the things which will be there, and uh, just to give you confidence, even the promoters will be putting money in small cap Mm. schemes. So when this question comes whether this is right time, clearly the promoters and fund manager, they will be putting money, so you know that even Mm-hmm. they believe that this is good time to invest. Mm. ओके नाउ अगेन ये एक जेनरिक क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग काफी लोग हम लोग स्मॉल कैप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं यू नो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स यू नो हम लोग को मालूम है कि स्मॉल कैप्स आर गोइंग टू डू वेल इन द years टू कम सो हम लोग खुद ही स्मॉल कैप स्टॉक खरीदते हैं now why should is it better to invest directly that way or I should be investing it through a fund? What is your view? What are the advantage of investing in the small cap through a mutual fund So vis-a-vis Neeraj, direct invest? Yeah. see, small cap now, I'll tell you, finding a good idea is one part of it. Mm. Second is every quarter you need to track the performance. Mhm. Why small caps move up or down so much is because their performance, Mm. execution versus analyst estimates, expectation, there is large deviation. Mm. In large caps, normally what happens, you expect, say, 10 rupees of earning, it will come at 11, 10.5. In small Correct. caps, you expect Mm. 10 rupees earning, sometimes it is 13, 14, sometimes it is 7, 8. So we need to make sure that if you have identified a good idea, then the execution has to happen at all point in time. That is where the real wealth generation happens. Mm. Otherwise, what happens if there's a challenge, they've lost business. Now we need to understand whether this business loss is for this quarter and it will come back next quarter, or there's a business where client has gone through a problem, business is not coming back. So if Mhm. investors can really have a grip on these kind of issues with small cap, then I think they can invest directly also, because see, eventually it is about knowledge and earnings. If you can estimate it right, a person ideally is entitled and should do that. But because these few challenges are there, it requires a lot of monitoring, meeting, talking to supply chain, understanding the overall competitive landscape.
So if you do not have that kind of time and resources at your disposal, then I think you should invest through small cap schemes where at least you know that the fund management team, fund manager, analysts, they are constantly looking at these businesses to understand these risks. If they play out, then there should some corrective action that is taken. Absolutely. Many times हम लोग ये complain often we hear from investors कि market तो ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा portfolio वहीं का वहीं है. It's not increasing, right? Even it might happen in the small cap as well. So I think that is why it's always better because mutual funds have got the expertise to deliver. And काफी सारे लोग नया आई थिंक दिस क्वेश्चन यू हैव आंसर्ड आल्सो तपस उन्होंने पूछा है हाउ लॉन्ग इज अ वेटिंग पीरियड बेटर फॉर बेटर रिटर्न इन अ स्मॉल कैप फंड अगर आपका फंड में इन्वेस्ट करें काफी सारे लोग कह भी रहा है कि आई एम गोइंग टू ईयरमार्क सो हाउ मच वेटिंग पीरियड horizon investment horizon should be. So, see, Tapas, what happens in small caps now, sometimes returns are captured in short period of time. So in last 15 years, there are at least 5 instances where in 1.5 years, index moved from 100 to 300%. Mm-hmm. So that is always, these peculiarities are there. And as I told you, sectoral rotation also happens. So for small caps, what we are saying is that at this point in time, if you look around yourself, where are the opportunities coming? Whether it is manufacturing, whether it is certain services, whether it is new tech IT, anything you look around, you will find that these are small cap businesses which are benefiting out of it. So then we are very sure about the opportunity. Then we have to find right businesses to participate in it and make sure that they continue to deliver. So if our earning expectation, Tapas, is say 25%, then ideally a stock market return should be in line with your earnings delivery. Sometimes happens is that what stocks run ahead of their expectation. That is why that kind of correction, time correction, or multiple derating that happens. But ballpark, if you have a decent 3, 5, 7 year horizon, you will look at the returns are broadly in line with the earnings and some kind of re-rating if there is qualitative improvement in the overall economy that is happening. So that is what I'm saying, that you have to stay invested for 3, 5 years to really see that your returns are in line with earnings. Correct. Again, another very important question, क्योंकि already there are lots of funds are there. Investors often क्या करते हैं कि they go to they compare the return in this particular category. So जहाँ पे सबसे ज़्यादा highest return मिल रहा है और return दे रहे हैं वहीं पे invest कर देते हैं. So is it the right way of selecting a fund? See, Neeraj ji, again, no easy right or wrong answer. Yeah, But no, it's just guidance, yeah. but this is clearly a tendency where people look at who is performing and then they put money. Uh, Sometimes what happens is that if the idea pipeline of the AMC or fund manager is not as strong as the inflows of money, then your portfolio becomes suboptimal. So if suppose if you are getting say 10% money, but if you are only able to generate good new 6-7% idea, then that 2-3% of money allocation goes into ideas where you are not very convinced about it. So sometimes this chasing the return leads to these kind of challenges for the fund manager and AMC. And then, sometimes some portfolios, AMCs, they have philosophy where they have larger allocation to cyclical industries. Now, again, your return is a function of what kind of allocation you have. If you have higher allocation to cyclical industry and that cycle picks up, then clearly that fund for that period outperforms. So you have to think of which are those kind of your investment, comfort with AMCs, fund managers, overall philosophy. So that again, see, I'm giving a long answer, but there are no easy answers there because Exactly. things sometimes work and sometimes they don't. So, for me,
it is easy to answer about companies, but Okay, it is a little great. difficult for me to answer these kind of, difficult questions where what will work in terms of schemes. Great. Now, okay. Now, we have been talking about how the growth prospect, we lot many themes going to play out in favor of India now. uh, the next 10-15 years looks great. It's a golden opportunity, and many people said that this is a once in a lifetime kind of an opportunity for us, to invest, create wealth for the long term. Now, definitely, as you said, the small sectors, small cap sectors, actually where it's going to reflect the highest. नाउ अगर हम लोग नेगेटिव्स का बात कहें, नॉट एग्जैक्टली नेगेटिव्स, केयरफुलनेस, इफ आई इन्वेस्ट माई से 40%, 30%, 50% पोर्टफोलियो, काफ़ी सारे लोगों का है भी, क्योंकि अभी लास्ट कुछ महीने में तो स्मॉल कैप का वेटेज बढ़ा चुके हैं. तो व्हाट शुड आई बी केयरफुल, हाउ शुड आई बी मैनेजिंग माई पोर्टफोलियो, हाउ ऑफन आई शुड रिव्यू, व्हाट शुड द स्टेप्स दैट आई नीड टू टेक? So, see, Neeraj, I think allocation wise, if you're already at 40-50%, then you don't need to do lump sum. STP, SIP, I think is the best way. And then again, as we are saying that large cap right now not performing well, and maybe 6 months, 1 year, the kind of visibility is still not there. So we need to see that way, that I think in terms of which sectors are going to do well for next 6 months, 1 year, and then keep reviewing our portfolio allocation based on at least 6 months, 1 year, so that even if something is underperforming, we shouldn't be bothered about it, but at least we know that our allocations are right. So that, I think, review of maybe once in a year, I think, is a good strategy, and right allocation of based on risk profile. Because see, again, what happens is somebody who is even longer investment horizon, then a lot of wealth creation happens there by just holding those things. And considering Indian market where we are, and I think the kind of uh, clarity we have in terms of even policy continuity, I think we are in that place where I don't want to give you, a very optimistic answer, but things are looking good. The only thing is, the what is concerning to people is that last 9 months return has been good, so whether I should be careful or not. I think the only part which is troubling people is that, yeah, after a good return cycle, should I wait, withdraw, or continue? That is where I'm saying that if we are so clear about the growth prospects, we need to make sure that we participate in it. Absolutely. So I think great, Ajay. We have discussed in depth about your fund, about the prospect of the small cap going forward, long term great opportunity. We should be, fairly, as you said, very important. अगर कोई stocks मेरे पास है and उसका quantity insignificant है, then अगर वो 200%, 400% भी really हो जाता है, तो मेरा benefit overall नहीं होता. So I need to be intelligent enough to allocate right proportion to the theme that's going to play out in the coming time. So again, your last advice to all our viewers, all our investors, all our listeners, what's your last advice with respect to your fund and with respect to small cap uh, as a whole? So, sir, see, apart from the allocation, I think since we'll be starting now, we will have a much better in terms of valuation. We'll have a good group of stocks which are reasonably valued. So we do not have any legacy portfolio. So no such overvalued stocks in your portfolio risk is there. And I think we are in a good cycle. We need to be patient. There'll be some challenges, because see, in last 3-4 years, if you look at, the challenges have been which are very different in nature and cannot be preempted and put it in numbers, whether it is war, COVID, or all these challenges. So something or the other will come up. I'm sure there will be volatility in near term, but the kind of growth path we are on, I think we have to keep reminding ourselves that we have to make sure that we do not miss on the larger picture by focusing on this near term return. That's what, sir.
Wonderful. Thank you so much, Ajay, for a wonderful discussion. I'm sure lots of questions being answered, clarity of thought achieved. And also, I'd like to thank all our viewers for being a part of this program. I'm sure whatever effort that we are putting in, it at least gives some value to you. So thank you so much, everyone. Thanks, Ajay. Thank you, sir. And Thanks for the thank opportunity. you. Thank you.